Good evening to everybody. Myself, Lakshi Dublish. I am an assistant professor in BBA department of IIMT College of Management. I welcome you all on our YouTube channel, IIMT Group of Colleges. Today, we'll be discussing a new topic, new product development process. So let's start with what is new product development. When a company launches a new product in the market, the whole process is known as new product development. So why there is a need to produce a new product in the market? As we all are aware about the consumer preferences, that changes with time. And with the increasing competition and advancement in technology, the consumer wants to try out new products and the company also provide them with the new product so that the consumer stays loyal with the company. Company also checks out what the customer wants, what the market wants, and then try to make smart improvements in their products and to try to develop new products that can meet and exceed the customer expectations. So, how many steps are there in the new product development process? According to the Philip Kotler, there are 8 stages of new product development process. First is idea generation. Then we have idea screening. After that, we have concept development and testing. After that, we have marketing strategy development. Then we have business analysis. Then we have product development and then test marketing. And finally, the commercialization stage. So let us all discuss these topics in detail, all the stages. So first stage is idea generation. As the name suggests itself that we have to generate different ideas so that we can create a new product out of that particular idea. So here we will be finding out what is the market trend that is going on, what is the problem that has been faced by the consumer, and we try to give them a solution in the form of a product. So there are various sources through which we can find out different ideas. The 2 major approaches are internal idea generation and other one is external idea generation. In internal idea generation, we try to talk to the employees who are internally available in the organization. And in external idea generation, we try to talk to the people who are outside the organization. In internal idea generation, we talk to our employees, the ones who are creating the products for the customers, as they are already aware about what a customer wants, what are the problems that has been faced by them. And we can talk to our R&D department as well, as research and development department also knows what are the shortcomings of our products and what is the latest market trend, what is something different in our competitors' brands, so that we can also try to launch something different with our product as well. They try to survey each and everything. So they are also well aware about all this stuff. So they can also give us a good idea so that we can convert a good idea into a new product. Then we can talk to our technical team, sales team, and the customer support team as well, as they are aware about the feedback that has already been given by the customers, so that we can try to work on them and try to create a new product in the form of the solution. Then we have external idea generation. Here we can directly contact to our customers. We can ask them what they want in the product so that we can try to bring that change in the product, or we can talk to our suppliers, distributors, as they are also in direct contact with our customers. So we can talk to them as well. They'll also be able to give us a good feedback. Then we can check out the competitors' product. Competitors are also giving out new changes in the product so that we can analyze their product as well. We can outsource the particular company this thing that they can also try to find out a good idea for us and we can pay them for that. So these are the different approaches through which we try to collect a lot of ideas. Then once we are done with idea generation, we'll move to idea screen. Now we are having a lot of ideas in our hands through different people.
Now we have to screen those ideas. We have to basically segregate good ideas and the weak ideas. Here, when we have already segregated both of them, then we'll discard the weak ideas and then we can try to move forward with the good ideas. Now there are a lot of good ideas and we have to pick up a particular idea which has a capacity to convert itself into a successful product. So basically, so when we have discarded the weak ideas and now we'll try to identify good ideas and we are having a lot of good ideas, now we'll give this good ideas to a group of people who are having expertise and experience of the relevant industry, and then they'll try to find out a particular idea which has a capacity to build itself into a successful product. And how these people are going to check these products? Actually, there are certain criteria on which a particular product has to stand out, and these expertise and the experienced professionals will try to check the particular idea on all these criteria. Few of them are profitability, whether that product is profitable for the company or not, whether that particular product is able to generate enough profits. If yes, then we'll move forward with the idea, and if not, we'll drop that idea. So here are few more criteria like whether that product fits in the market or not, whether that particular idea is aligned with the company's strength, weakness, missions, and goals. If yes, we'll move forward with the idea, and if not, we'll drop that particular idea. Now we are having a product idea in our hands through idea screening. Now we'll move to the third stage, that is concept development and testing. What is concept development? In concept development, we are having a written description of what the product would be, what will be the features, what will be the labeling, what will be the packaging of the product, and we are having a detailed description and the blueprint of that particular idea. Here, we will not be making a real product, but we'll just be having a blueprint and the detailed idea, where each and everything like estimated cost of designing and development and launching of the product will be discussed, how the product will look, all these things will altogether forms the concept development. Now we are having a blueprint of how the product will look and how we are going to sell that product. Each and everything is mentioned in concept development. Now we'll be testing that concept development with a selected group of consumer. Here we'll be telling them about more about the product and how they will be responding. Basically, depends when we are introducing that product to them. So here we'll be collecting the feedback whether they are liking the idea of the product or not. So before moving on with the next stage, we try to sum up this over here only, as we'll be investing a huge amount in the resources over here. So we have to check whether the consumers are liking it or not. So once the consumers are okay with it, they're liking the product, we'll move on to the next stage, that is market strategy development. Here, we'll be constructing an initial marketing strategy for the new product development, where we'll be discussing about all the 4 P's of the marketing mix, about the product, features, labeling, packaging, and the price of the product. What are the factors on which we'll decide the price of the product, which type of promotion we'll choose, which type of channel of distribution we'll choose. All these things will be discussed over here. The first year marketing budget, how much we are going to spend on our marketing, all these things will be discussed in the marketing strategy. Once we are done with the marketing strategy, we'll move on to the business analysis. Now we have done with the marketing strategy, we have discussed all the 4 P's and what will be the factors on which we'll be doing the marketing. Now we'll check whether that particular product will be able to generate enough cost, profit, and the sales or not. So here we'll be discussing each and everything about the sales, so that whether that product will be able to help the company to survive in the market or not. Here, with the help of the
sale history of the comparable products, we can check out the estimated sales, and we can have a clear understanding whether the market will be able to accept the particular product or not. Then if the market is going to respond in a good way and accept the product, and we are having a good sales and the profit, then we'll accept the product, and then we'll move on to the next stage, basically, that is product development. So there is this difference between concept development and product development. In concept development, we were having a blueprint of the idea, the written description, basically. And in product development, we are having a real product. We'll be manufacturing a real product in this stage, and we are having a prototype over here. So what is a prototype? A first or the preliminary version of something which from which other forms can also be developed. So we make a prototype over here and try to check the effectiveness and the safety of that particular prototype, whether in the organization or outside the organization, so that we'll be able to understand whether the product is working effectively or not. So once we are done with the product development, now we are having a original and a real product in our hand in the physical form. We'll move on to the next step, that is test marketing. So here we will be launching our product not to the whole of the market, but to few people or few segments, so that we can check out whether the product is working in the initial stages of that particular segment or not. So here we will be checking the marketing strategies, whether that product price is acceptable by the customers, whether they are having any problem with the labeling, packaging, or they are having any issue with the usage of the product. So each and everything will be checked in the test marketing. And we are not launching this product in the whole of the market, but to few people. So we are testing the product in the actual marketing conditions over here. Actual market conditions are there, and we are checking the product in the actual market, but not to the whole of the India as whole of the market, basically. So because if there is any problem in the product, we'll get a feedback about it, and then we'll change that particular thing about that product, which is not liked by the customers. So once we are done with it, we can change the product. As we all are aware that high cost of complete introduction process is there. So we have to incur a lot of amount to launch a product. So if we are launching a wrong product, that will be very problematic for the company. So here we will discuss each and everything with the customers. Customers will try the product, and then we'll get to know about the feedback, whether they are liking it or not. If not, what are the changes that is required? We'll make those changes. If yes, we'll move on to the next stage, that is commercialization. In commercialization, basically, we are releasing a new product to the whole of the market. Or we have, basically, this is going to be a very, very critical stage, as a good product launch is required for a successful product. So here we have to launch our product in a very grand manner, so that we will be able to grab a lot of attention on that particular product. So there are few things that need to be taken into account before introducing the product. First is introduction timing. So if the economy is not doing good, so we have to postpone our launch till the economy boosts up, till the economy is in good stage. So we have to postpone our launch till that particular time. And if the competitor is also launching the product, so we have to launch our product before the competitors launch, so that we can grab a good attention of the consumers, and consumers will also get that particular idea, which is something new about the product, before our competitors' product. Introduction phase is also very important, as we will be launching our particular product in one place or different places, international market or international market. So this is also something very important, that we have to check it out before commercialization. Then the person who is launching the product is also very important.
So there are different companies who try to choose heroes, heroines, actors, actresses, or renowned or famous people to launch their products. So as we all are aware that if our hero, our actor will choose something, then we also try that product. So this is the reason behind choosing different and the famous and the renowned people, because they are having a huge fan base. So the huge fan base will also try to check out that product and try to use that product. So this is also very crucial and the important stage in the new product development process. So let us just revise the whole process in few minutes so that we can have a good idea. So what is new product development? मैंने बताया आप लोगों को जैसे कि एक कंपनी जब मार्केट में अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उस पूरे प्रोसेस को, जो सारे स्टेप्स वो कंपनी लेती है, उस सारे प्रोसेस को हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की क्या जरूरत है? एक प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये पूरे स्टेप्स को, जो 8 स्टेप्स हैं जो फिलिप कोटलर ने दिए, इन सबको फॉलो करने की जरूरत है। अगर हमने ये सारे 8 स्टेप्स फॉलो किए, देन वी आर श्योर दैट वी आर हैविंग अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट इन आवर मार्केट। So as we all are also aware about the consumer preferences, आज मेरे को कोई चीज पसंद है, शायद कल मेरे को वो चीज पसंद ना आए, मैं दूसरा कोई प्रोडक्ट यूज करना चाहूँ, तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज होती रहती है। कंज्यूमर एक प्रोडक्ट से बोर हो जाता है, फिर वो दूसरे नए प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहता है। तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस की वजह से, कंपटीशन बढ़ने की वजह से, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से हम नए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और कंपनी भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है जिससे कि उसका कंज्यूमर लॉयल रहे उसी कंपनी के साथ, किसी और कंपनी का प्रोडक्ट ना यूज करे। तो हमने डिस्कस किया था कि 8 स्टेजेस होती हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की। सबसे फर्स्ट स्टेज थी हमारे पास आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन नाम ही अपने आप में बता रहा है कि हमें एक आइडिया जनरेट करना है, जिस आइडिया को हम कन्वर्ट करेंगे न्यू प्रोडक्ट के अंदर। सो बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं, 2 मेन अप्रोचेस हैं, इंटरनल आइडिया जनरेशन एंड एक्सटर्नल आइडिया जनरेशन। इंटरनल आइडिया जनरेशन के अंदर हम जो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं उनसे हम डिस्कशन करते हैं और उनसे आइडियाज के बारे में डिस्कस करते हैं और उनसे आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। इंटरनली इनसाइड में ऑर्गेनाइजेशन के कौन लोग काम करते हैं? एम्प्लॉयज काम करते हैं, टेक्निकल टीम, सेल्स टीम, कस्टमर सपोर्ट टीम, जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होते हैं कस्टमर्स के, वो हमारे एम्प्लॉयज हैं। तो हम अपने एम्प्लॉयज से ही बात करके नया आइडिया जनरेट करने की कोशिश करते हैं। हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से भी बात करते हैं, क्योंकि R&D डिपार्टमेंट इज द वन सच इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट जो हमारी हेल्प कर सकता है हमें हमारे ड्रॉबैक्स बताने में, और हमें एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देगा कि क्या चेंजेस हम अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कर सकते हैं और क्या प्रॉब्लम कस्टमर्स फेस कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और हम उनका सोल्यूशन दे सकते हैं नए प्रोडक्ट की फॉर्म में। फिर एक्सटर्नल आइडिया जनरेशन आता है। एक्सटर्नल आइडिया जनरेशन के अंदर हम जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग होते हैं उनसे बात करते हैं। जैसे डायरेक्टली हम कस्टमर्स से बात कर सकते हैं, फोन कॉल करके, उनको क्वेश्चनर देके, उनके साथ इंटरव्यूज करके, और जान सकते हैं कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है एक प्रोडक्ट को यूज करने में, और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, या हमसे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें जो उनकी नीड्स और उनके वांट्स के अकॉर्डिंगली ही बनाया जाए। सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी बात की जा सकती है, क्योंकि वो भी कॉम्पिटिटिव कस्टमर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं। फिर हम कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के अंदर क्या ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी एक पर्टिकुलर फीचर अवेलेबल नहीं है जो हम अपने नए प्रोडक्ट के अंदर वो फीचर लॉन्च कर सकते हैं। फिर हम आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, बेसिकली हम एक कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं जो हमें एक अच्छा आइडिया प्रोवाइड कर सके। तो अब हमारे पास बहुत सारे आइडियाज अवेलेबल हैं, अब हम इन आइडियाज की स्क्रीनिंग करेंगे। बेसिकली हम सेग्रीगेट करेंगे अच्छे आइडियाज को और बुरे आइडियाज को। जो बुरे आइडियाज हैं उन्हें हम डिस्कार्ड कर देंगे, जो अच्छे आइडियाज हैं वो हम एक ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स को प्रोवाइड करेंगे। जो ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स हैं उनके पास एक्सपर्टीज भी है, एक्सपीरियंस भी है उस पर्टिकुलर रेलेवेंट इंडस्ट्री का। दे विल डिस्कस और
बातचीत करेंगे वो उन सारे टॉपिक्स पे, और फिर एक ऐसा आइडिया चूज करके लाएंगे जिसके अंदर कैपेसिटी है कि उसको हम एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट के अंदर लॉन्च कर सकें। अब बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिनके ऊपर जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक गुड आइडिया को चूज करते हैं। जैसे प्रॉफिटेबल, अगर एक आइडिया प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम उसे चूज नहीं करेंगे। अगर वो मार्केट में ट्रेंडिंग नहीं है तो हम उसे चूज नहीं करेंगे। अगर वो कंपनी के मिशन और गोल्स के साथ अलाइंड नहीं है, वो डिफरेंट है कंपनी के मिशन और गोल्स के साथ, देन फिर हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो दीज आर द क्राइटेरिया जिन पे प्रोफेशनल्स एक अच्छा आइडिया सेलेक्ट करते हैं या आइडियाज की स्क्रीनिंग करते हैं। अब एक पर्टिकुलर आइडिया हमारे पास है, अब हमें उस एक पर्टिकुलर आइडिया को ब्रीफ करना है रिटन में। एक रिटन डिस्क्रिप्शन होगा कि हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, उसके अंदर क्या फीचर्स होंगी, कैसी पैकेजिंग होगी, कैसी लेबलिंग होगी, कितना एस्टिमेट लगेगा कॉस्ट का हमारा डिजाइन करने में, उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में, उसकी लॉन्चिंग करने में। ये सारी चीजें, सारी बातें हम कंसेप्ट डेवलपमेंट के अंदर डिस्कस करते हैं और एक रिटन फॉर्म में, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में उसको लिखते हैं। अब हमारे पास एक ब्लूप्रिंट आ गया है। अब हम इस ब्लूप्रिंट को कुछ कस्टमर्स के साथ चेक करेंगे। अब हम अपने कुछ कस्टमर्स से बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हम ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हैं, और इफ वो कस्टमर्स लाइक करते हैं उस कंसेप्ट को, तो हम उसे नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ेंगे, अदरवाइज हम उस आइडिया को ड्रॉप कर देंगे। फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड डेवलपमेंट में आएंगे। जब हमारे कस्टमर्स उस कंसेप्ट को लाइक कर लेंगे, बता देंगे कि वो वी आर लाइकिंग इट एंड वी वांट दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर हम मार्केटिंग मिक्स को डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट के कैसे फीचर्स होंगे, कितना प्राइस होगा, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज करेंगे हम प्रोडक्ट को डिफरेंट जगह पे अवेलेबल कराने के लिए, कौन से टाइप ऑफ प्रमोशन का इस्तेमाल करेंगे, कौन सेगमेंटेशन होगा, कौन सी टारगेटिंग होगी, किस टाइप की पोजिशनिंग करेंगे, फर्स्ट ईयर का बजट क्या होगा मार्केटिंग का, कंपनी का सेल्स कितना होंगे, प्रॉफिट्स कितने होंगे लॉन्ग टर्म के, ये सब मार्केटिंग मिक्स के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे पहले ही मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर। अब हमने मार्केटिंग का पूरा कंसेप्ट डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से हम मार्केटिंग करेंगे और किस तरीके से प्राइस डिसाइड करेंगे, प्रमोशंस करेंगे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे बिजनेस एनालिसिस पे। बिजनेस एनालिसिस नाम ही बता रहा है कि बिजनेस को एनालाइज करना है कि ये बिजनेस हमें कितना प्रॉफिट और सेल्स दे पाएगा या नहीं, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कैसे हम चेकआउट करेंगे? जो ऑलरेडी उस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल हिस्ट्री चेकआउट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट भी अगर हम उसके अंदर कोई नए फीचर्स लेके आते हैं तो वो वर्कआउट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हम अगर एक ऐसा प्रोडक्ट आइडिया चूज करेंगे जो एक अच्छा आइडिया होगा और हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे पाएगा, देन वील गो ऑन विद द आइडिया। अदरवाइज हमने ऐसे डिस्कस किया है कि हम अगर उसके अंदर फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस नहीं होगी, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, तो हम उस आइडिया को ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज लगाते हैं और बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं एक पर्टिकुलर नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इसलिए हर स्टेज पे उसकी टेस्टिंग होना जरूरी है। अगर वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है तो हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, जिस स्टेज के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हमने डिसाइड किया कि कंसेप्ट डेवलपमेंट के अंदर तो हमारे पास रिटन फॉर्म में एक ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास रियल प्रोडक्ट होता है। हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं नए प्रोडक्ट की बेसिकली। इसके अंदर हम प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप क्या होता है? जब फर्स्ट टाइम एक वर्जन बनाया जाता है एक प्रोडक्ट का, और उस प्रोडक्ट के वर्जन के साथ हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के वर्जन बना सकते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। अब जब हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं तो हम प्रोटोटाइप की इफेक्टिवनेस भी चेक कर लेंगे, वेदर जिस चीज के लिए हम उसको बना रहे हैं वो गोल अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, और वो प्रोडक्ट सेफ है या नहीं है। ये सारी बातें हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर चेक करते हैं। अगर वो क्वालिफाई कर जाता है इन सारी स्टेजेस को, फिर हम नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, दैट इज टेस्ट मार्केटिंग। अब हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो फिजिकल फॉर्म में है, रियल फॉर्म के अंदर है। अब इसको हम पूरे टारगेट मार्केट में लॉन्च करने से पहले हम एक छोटी सी ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के बीच, एक छोटे से एरिया के अंदर, मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे। इसकी मार्केट को
स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे एक्चुअल मार्केट कंडीशन के अंदर। एक्चुअल मार्केट कंडीशन है, सेम है सब कुछ, लेकिन बस एक छोटे से लोगों के बीच में है, कम लोगों के बीच में है। अब हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे कुछ लोगों के बीच में, वहां पे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को अपनाएंगे और चेक करेंगे कि वेदर जो हमारा टारगेटिंग है, पोजिशनिंग है, एडवर्टाइजिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पैकेजिंग है, ये सब चीजें सही तरीके से काम कर पा रही हैं या नहीं। अगर हमें पता चलता है कि वो चीजें सही तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं, तो हम उसमें अभी भी चेंजेस कर सकते हैं। जो चीजें कस्टमर्स को पसंद नहीं आएंगी, हम उनको चेंज करके और वो ऐसा प्रोडक्ट बना देंगे जो कस्टमर्स को बिफोर फुल लॉन्च करने से पहले जो चीजें कस्टमर्स को पसंद आएंगी। हमें पता है कि हम लोग कमर्शलाइजेशन के स्टेज में जब एक प्रोडक्ट को फुल्ली लॉन्च करते हैं पूरे मार्केट के अंदर, तो हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट क्लियर करनी पड़ती है और उसके अंदर हमें बहुत सारी एक्सपर्टीज की भी जरूरत पड़ती है, और इसलिए हम हाई कॉस्ट इनकर करते हैं उसके ऊपर। तो बिफोर कमर्शलाइजेशन स्टेज हम टेस्ट मार्केटिंग के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट की कमियां हैं उन्हें चेक कर लेते हैं। अगर फीडबैक अच्छा आता है, कस्टमर्स लाइक करते हैं, तो हम दूसरी स्टेज के अंदर बढ़ते हैं, जो लास्ट स्टेज है हमारी कमर्शलाइजेशन स्टेज। ये लास्ट स्टेप होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। इसके अंदर हम हमारे न्यू प्रोडक्ट को पूरा मार्केट के अंदर लॉन्च कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ये बड़ा क्रिटिकल स्टेज होता है, क्योंकि कमर्शलाइजेशन के अंदर हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च करना बड़ा सक्सेसफुल इवेंट होना चाहिए, अदरवाइज हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस होती है, कस्टमर्स को पता चलता है कि एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो उसका सक्सेसफुली लॉन्च होना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ चीजें हमें जो ध्यान में रखनी होती हैं कमर्शलाइजेशन की स्टेज पे, वो है इंट्रोडक्शन की टाइमिंग। अगर इकोनॉमी बहुत वीक है, चल रही है उस टाइम पे, तो हम अपने प्रोडक्ट के लॉन्च को पोस्टपोन कर देंगे, थोड़े कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगे। फिर उस टाइम के बाद जब हमारी इकोनॉमी बूस्टअप हो जाएगी, फिर हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे, सो दैट वी कैन अर्न गुड प्रॉफिट। अगर हमारा प्रोडक्ट जो कॉम्पिटिटर है वो भी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है नया, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कॉम्पिटिटर से पहले हम अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, जिससे कि हम नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी ग्रैब कर सकें। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन की प्लेस। हम कहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, कहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं अपना प्रोडक्ट, ये भी हमें कमर्शलाइजेशन की स्टेज से पहले डिस्कस करना होता है। एक पर्टिकुलर प्लेस पे लॉन्च करेंगे या बहुत सारी प्लेस पे लॉन्च करेंगे, नेशनल मार्केट में लॉन्च करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करेंगे, लोकल मार्केट में लॉन्च करेंगे, ये सारे डिस्कशन भी कमर्शलाइजेशन स्टेज में होता है। लास्ट स्टेप मैंने बताया, बिल्कुल लास्ट पॉइंट होता है कि कौन इंसान उस इंट्रोडक्शन को करने वाला है। एक्टर्स, सेलेब्स, फेमस पीपल, रिनोन्ड पीपल, उन लोगों को चूज किया जाता है प्रोडक्ट की लॉन्च कराने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनका ह्यूज सेपरेट फैन बेस होता है। तो हम उन सेपरेट फैन बेस को भी चाहते हैं कि वो लोग भी ट्राई करें, क्योंकि वो उन लोगों को अपना मेंटोर मानते हैं, या उन लोगों की जो लोग वो जो उनके एक्टर्स चूज करते हैं, उन चीजों को वो भी ट्राई आउट करना पसंद करते हैं, वो इतना बिलीव, इतना ट्रस्ट शो करते हैं अपने रोल मॉडल्स के ऊपर। सो हम उन रोल मॉडल्स का यूज करते हुए उन लोगों को टारगेट करते हैं बेसिकली, जो उनके फैंस होते हैं। So thank you so much for staying with me till the end of this video. If you find this video informative, please do like, share and subscribe. Thank you so much.